गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 निकाली है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस जो है वर्ल्ड में केटर करता है 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। लगभग 27% ऑफ ग्लोबल बर्डन इंडिया के ऊपर ही आ रहा है ग्लोबल टीबी का। तो टीबी क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज़ जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। जनरली ये लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये थ्रू एयर होती है। मोस्ट इन्फेक्शंस में सिम्टम्स होते नहीं हैं, इसलिए इसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको रोकने की बात करें तो इसके लिए बीसीजी वैक्सीन लगती है, और अगर हो जाए किसी को तो उसके लिए मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देनी पड़ती हैं। अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? एक पर्सन जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से तब पीड़ित होता है जब उसकी जो ट्रीटमेंट है वो मेन टीबी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। दो मेन टाइप्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं, एमडीआर और एक्सडीआर। एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सडीआर मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। तो डब्ल्यूएचओ ने 2014 में एंड टीबी स्ट्रेटजी अपनाई है, जो कि कह रही है कि टीबी एपिडेमिक को 2035 तक ग्लोबली हम ख़त्म कर देंगे। 95% रिडक्शन करना है नंबर ऑफ टीबी डेथ्स में, 90% रिडक्शन करना है टीबी इंसिडेंस रेट में, और ज़ीरो टीबी अफेक्टेड फैमिलीज़ जो कि कॉस्ट की वजह से टीबी को अगर सकम कर रही हैं तो उसको 2035 तक रोकना है। तो अगर हम देखें इस रिपोर्ट के बारे में, तो 192 कंट्रीज़ का इसमें डेटा लिया गया है। 7.5 मिलियन जो है पीपल इसमें देखा गया है कि डायग्नोस हुए हैं टीबी से 2022 में, जो कि हाईएस्ट आज तक का रिकॉर्डेड फिगर है। डब्ल्यूएचओ ने ये पॉइंट किया है कि एक मेजर ग्लोबल रिकवरी भी शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, जहाँ पर 60% ऑफ ग्लोबल रिडक्शंस देखी गई हैं केसेस की। अगर हम इंडिया में बात करें तो 2.8 मिलियन मतलब 28 लाख के आसपास केसेस 2022 में हुए, जिसमें केस फेटेलिटी रेशियो 12% रहा। नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं टीबी की वो 3,42,000 रही। एमडीआर टीबी जो है सबसे बड़ा एक हेल्थ क्राइसिस रहा है इंडिया में। अब क्या इंडिया ने प्रोग्रेस किया है? येस, ऑफ कोर्स। इंडिया जो है इसमें ट्रीटमेंट कवरेज लगभग 80% से इम्प्रूव कर चुका है, और रिडक्शन ऑफ टीबी इंसिडेंस जो है वो 16% हुआ है 2022 में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मॉर्टेलिटी रेट भी इंडिया ने 18% रिड्यूस किया है। अब ऐसा हो कैसे पाया है? गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के टीबी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, निक्षय पोषण योजना, पेशेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लाइक फैमिली केयर गिवर मॉडल और डिफरेंशिएटेड केयर, फिर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है। अब रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं कि सबसे पहले तो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करो, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स का, जिसको टीबी हुआ है उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किया जाए। फिर को एपिडेमिक्स को जो है वो भी एड्रेस किया जाए, जैसे एचआईवी। फिर अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस का भी एक्सेस बढ़ाया जाए, रिसर्च और इनोवेशन बढ़ाई जाए इसमें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को जो है प्रोग्रेस तो उसकी तरफ की जाए, और टीबी के फाइनेंस को भी ऑगमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्वती रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक ट्रैकर की बॉडी जो है वो पार्वती रिवर से मिली है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पार्वती रिवर को हम जो है वो पार्वती वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है लोकेटेड है, और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। और ये मन तलाई ग्लेशियर जो कि पिन पार्वती पास के वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद ये ब्यास रिवर में भूंतार में मिल जाती है। ये ऑफ कोर्स मेल्टिंग ग्लेशियर्स और साउथ वेस्ट मानसून के वाटर द्वारा फेड है। ये रिवर जो है वो बहुत ही फेमस है अपने सिल्वर ओर को कैरी करने में अपने रिवर सैंड में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 500 एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 500 एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसको फास्ट कहा जा रहा है, उसका डेटा यूज़ करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली 5 न्यू पल्सर जो हैं वो डिस्कवर किए हैं।
तो ये फास्ट जो टेलीस्कोप है, ये रेडियो टेलीस्कोप है चाइना के गुजू प्रोविंस में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है, 30 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है। न्यूट्रल हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना, इमेजेस ऑफ अर्ली यूनिवर्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, पल्सर्स डिस्कवर करना, हाई रेजोल्यूशन रेडियो स्पेक्ट्रल सर्वे करना, इवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को भी सर्च करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब पल्सर्स क्या होते हैं? बेसिकली रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो कि रेडिएशन की पल्सेस ब्लास्ट आउट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, उनको हम पल्सर्स कहते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि जो पोल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो परफेक्टली अलाइंड नहीं होते हैं स्पिन ऑफ द पल्सर से, इसलिए जो ये बीम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड लाइट जो हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह ये पल्सर रोटेट करते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ पल्सर डिपेंड करती है अर्थ के ऊपर इस हिसाब से कि अर्थ जो है वो किस लाइन ऑफ साइट से जो है गुजर रही है पल्सर्स के। तो जो टाइम बिटवीन जो ये पल्सेस होता है इसको हम पीरियड ऑफ पल्सर कहते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? एक मासिव स्टार जब एक्सप्लोड हो जाता है अपने एंड ऑफ लाइफ पर, तो जो उसका कोर है वो कोलैप्स हो जाता है, एक सुपर डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि जिसका मास सन से भी हमारे ज़्यादा होता है। अब ये स्मॉल इनक्रेडिबली डेंस कोर जो होते हैं एक्सप्लोडेड स्टार्स के, इनको हम न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोल इंडेक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो 3.83 पॉइंट्स बढ़ा सितंबर में बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ कोल। तो नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो हमारे चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ कोल को दिखाता है ऑन अ पर्टिकुलर मंथ। ये कोल के जितने भी सेल्स चैनल हैं उन सब के प्राइजेस को कंबाइन करके ये इंडेक्स बनाया गया है। बेस ईयर इसका 2017-18 है। इसको बनाया किसने है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने। ठीक है। इसमें कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों ही तरह के जो है और बाकी कई ग्रेड के भी जो है कोल इसमें जो है वो ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, वो लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों को पहुंच चुका है थ्रू 14 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अंडर दिशा स्कीम। अब 2012 से ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है एक्सेस टू जस्टिस स्कीम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। मेजर फोकस है इसका लीगल एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, उनको सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशन और कम्युनिकेशन मटेरियल देना लोकल लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना पंचायती राज फंक्शनरीज की और विलेज चीफ्स की, ताकि फॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से उनको अवगत कराया जा सके। तो पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है ये एम्पावर करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। इसमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ भी बढ़ाई जाती हैं की जस्टिस प्रोवाइडर्स की, ताकि वो पुअर और डिसएडवांटेज को सर्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना, एनहांस डिलीवरी ऑफ लीगल लिटरेसी के लिए, लीगल लिटरेसी को मेन स्ट्रीम करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना ग्रास रूट वर्कर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की या वॉल्टियर्स की, इंडिकेटर्स ऐसे डेवलप करना जिससे हम लीगल लिटरेसी को मेजर कर सकें। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 निकाली है, जिसमें ये पाया गया है कि लेस देन 25% ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वो क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं अपने हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करने के लिए। तो ये हाईलाइट कर रही है कि हेल्थ प्रोटेक्शन को एक प्रायोरिटी बनाओ हर कंट्री में, और हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जनरेट करो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि एक्सट्रीम हीट जो है उससे ग्रेटेस्ट मॉर्टेलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो हीट वार्निंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो सिर्फ अभी हाफ ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज़ में ही अवेलेबल हैं। इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर में, ताकि मोस्ट वल्नरेबल जो है जो कि उनको सेफ गार्ड किया जा सके। अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर शुरू हुई थी 1873 में, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 1950 में। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि मीटरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज के ऊपर काम करती है। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में सिचुएटेड है, स्विट्जरलैंड में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is global TB report. This topic is important for your social issues. So the World Health Organization has released this global TB report 2023, and it has said that India accounted for highest number of tuberculosis cases in the world in 2022. So we have about 27% of global burden of TB cases in the world in just India. Okay, so tuberculosis is an infectious disease which is caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria, which generally affects the lungs, but it can also be extrapulmonary, which means that it can also affect other parts of the body. It is generally spread from one person to the next through the air, and most infections do not show any symptoms, that's why it is also known as latent tuberculosis. So prevention of TB requires vaccination with BCG vaccine, and it also involves screening those who are at high risk, early detection and treatment of cases. So treatment of TB generally requires use of multiple antibiotics for over a long period of time, and there are drug resistant TBs also. A drug resistant TB means that a person is not responding to one of the main TB drugs. So there are two main types of drug resistant TB. First, of course, is the MDR, that is multi drug resistant, and the XDR, that is extensively drug resistant TB. So WHO has formed this anti-TB strategy, which was adopted in 2014, in which we aim to end the TB epidemic globally by 2035. The aim is to reduce by 95% the number of TB deaths by 2035, a 90% reduction in the TB incidence rate, and zero TB affected families who face catastrophic costs due to TB by 2035. So if we look at the highlights of this year's report, so it features data from 192 countries, and it reveals that 7.5 million people were diagnosed with TB in 2022, making it the highest figure recorded since WHO began global TB monitoring in 1995. So WHO has also pointed out that a major global recovery is also undergoing, under which India, Indonesia, and Philippines, they have together accounted for over 60% of the global reductions in the number of newly diagnosed cases. So if we look at the status of TB in India, then India recorded 2.8 million cases in 2022 with a case fatality ratio of 12%. The best estimate of the number of deaths in India from TB was 3,42,000. The report also says that MDR TB remains a public health crisis in India. Okay, so how India is making progress. So under the treatment coverage, India has made significant progress, and it has improved to 80% of the estimated TB cases now. India's efforts have also resulted in reduction of TB incidence by 16% in 2022. The mortality rate of TB has also reduced by 18%. So government has launched several initiatives for active case finding, molecular diagnostics, decentralization of screening services, and private sector engagement. So schemes like PM Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, Nikshay Poshan Yojana, Family Caregiver Model, and Differentiated Care National TB Elimination Program, they all have served us in favorable outcomes. So what are the recommendations by this report? So this report says that we need to go for preventive treatment, especially for those who are household contacts of the TB patients, and we also need to address the co-epidemics like HIV. We have to increase the access to early and accurate diagnosis, and we have to undergo research and innovation, uh, so that in terms of course number of tests, products or methods in development, and we have to make our progress towards universal health coverage. Okay, apart from that, there is also need to augment TB finance. Okay, because there was an observation that there has been a decline in global funding available on essential TB services, perhaps due to the COVID epidemic uh, in the past few years. So the next topic is Parvati River. This topic is important for your environment section. So a body of trekker has been found in Parvati River in Himachal Pradesh, Kullu district. So about if we look at Parvati River, it is also known as Parvati River, and it is located in the Parvati Valley of Himachal Pradesh.
It is a major tributary of Byas River. It originates from Mantalai Glacier below the Pin Parvati Pass, and it flows in a gradual curve from northwest to southwest, past the pilgrimage center of of the pilgrimage center of Kullu, and it flows for approximately 150 km before merging into the Byas River at Buntar. And this river is fed by melting glaciers and southwest monsoons. This river is very well known for carrying silver ore in the river sand. Okay, so the next topic is 500 aperture spherical telescope. This topic is important for your science and tech section. So using the 500 aperture spherical telescope, astronomers from China and Australia have recently discovered the five new pulsars. So about what is this fast telescope? It is a radio telescope in China's Guizhou province, and it is the world's largest and most sensitive radio telescope, which has an receiving area equivalent to 30 football fields. So the aim of this telescope is to detect neutral hydrogen at the edge of universe and to reconstruct the images of early universe. It also aims to discover pulsars, and it performs high resolution radio spectral surveys also to detect weak space signals, and it also participates in search for extraterrestrial intelligence. So, what are these pulsars? So, pulsars are rapidly rotating neutron stars which blast out pulses of radiation at regular intervals, ranging from seconds to milliseconds. Pulsars have strong magnetic fields which funnel particles along their magnetic poles. Okay, because the poles of magnetic field are not aligned perfectly with the axis of spin of the pulsars, the beams of particles and light are swept around the pulsar, uh, and how it rotates. So, periodicity of pulsars is caused by the beams of light which cross the line of sight on Earth, with pulsars appearing to switch off at points when the light is not facing or when light is facing away from us. So, the time gap between these pulses is the period of the pulsar. Okay, so what is a neutron star? It is a massive star which has exploded as a supernova at the end of its life, and its core is gets collapsed into a tiny and super dense object. These small, dense cores of exploded stars are neutron stars. So the next topic is National Coal Index. This topic is important for your economy section. So National Coal Index has risen by 3.83 points in September because of growing demand for coal. So National Coal Index reflects the change in the price level of coal on a particular month relative to the fixed base year. So the price index combines the prices of coal from all the sales channels. The base year is 2017 and 18, and so this has been developed by the Indian Statistical Institute, Kolkata, and this includes coking and non-coking of various grades transacted in the regulated and non-regulated sectors. Okay. So the next topic is legal literacy and legal awareness program. This topic is important for your governance section. So legal literacy and legal awareness program of the Department of Justice has reached more than 6 lakh people through 14 implementing agencies under the Disha scheme. So legal literacy and legal awareness program uh, is being implemented since 2012 to give access to justice in northeastern states specifically. Uh, and to provide or to empower poor and disadvantaged sections of society. So the major focus is on legal empowerment of community, dissemination of simplified information, education and communication materials in local languages and dialects, capacity building of Panchayati Raj functionaries and village chiefs who are working on formal justice delivery system. So the program also seeks to improve the institutional capacities of key justice service providers, using the technology for enhanced delivery of legal literacy, mainstreaming legal literacy through building and forging partnerships across ministries and other departments, capacity building of grassroots frontline workers or volunteers, and also to develop the indicators to measure legal literacy and legal awareness in India. Okay. So the next topic is Climate Services Report 2023. This topic is important for your this topic is important for your environment section. So recently, World Meteorological Organization has released this Climate Services Report 2023, and as per this report, less than 25% of the health ministries across the world, basically less than 25% of the countries in the world,
are using climate information and services to monitor health risks which are related to climate sensitivity. So it highlights that there is a need for health protection as a priority in almost all countries, and the need is to have high quality information for better decision making. For example, extreme heat causes the greatest mortality of all extreme weathers, yet heat warning systems are provided only in half of the affected countries. So, investments are needed to improve the capabilities of the health sector to safeguard the most vulnerable communities. Okay, so, what is World Meteorological Organization? It originated from the International Meteorological Organization and it was founded in 1873. Later on, it was converted into World Meteorological Organization and it was established in 1950. So, basically, it's the specialized agency of the United Nations for meteorology, weather and climate, operational hydrology, and other related geophysical sciences. It has a membership of about 187 countries. Its supreme body is World Meteorological Congress, which consists of representatives of members, and it meets at least every 4 years for general policy and adopting regulations. So, a 36 member executive council meets annually and implements those policies. Its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. So we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.